Hello, hi, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Pets Lover. If you don't like my videos, please like, share, subscribe the channel and press the bell icon. Back to the topic. Today the topic is how we check the quality of the bird. In video I am showing you my undersized male. This is not an exhibition male. There is an undersized male. You see the head of this male and the ring, we say necklace. The necklace and the color scheme. There all things are come to in the quality. They all things see in the quality. My male is very energetic because they are in a breeding mode, so they don't stay on a one place. You see there is a bit crown, not a much crown. There is a bit crown on her head, which is some feathers are coming front of the eye. We cut it out, and because if we don't cut it out, then we see the problem in eye. And there is a violet color male, and there is a female unmatched with this here. And you see they are very energetic. They are on breeding mode. The female is a sky blue color, but the male is a violet color. Now let's see what is the result. Male, then the mating, and one thing more, I'm showing you the budka. I don't use the dog because we have not much place outside the cage, so I'm using the budka. And you see the quality goes. There is one thing in a lot of countries, the bird prices are going down, and I am forcing to the people who ask me what we do now. I am just say have a bird, not in much of numbers, but some in a quality birds. There is not a very good quality, but even though this is the look like very good, everyone demands that kind of bird. They are not much cheap, they are not much high prices. Everyone can purchase it, so there is a market value of this bird is good. So if you just have a simple budgie, then you say the feed of the bird is higher than the price of the bird, so you can fix the problem, because no one want to pay the seed with own pocket. So there is a good planning to save money and do proper hobby and save some money too. अब उन भाइयों के लिए जो इंग्लिश को ज़रा क्लियरली नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, ये मेरा अंडर साइज का मेल है, वायलेट कलर में मेल है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते जस्ट एग्जीबिशन हो, जस्ट यूके लाइन हो, अदर लाइन हो। हम कहते हैं कि आप कोई भी बर्ड रखें, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तभी उसकी जो मार्केट डिमांड है वो बढ़ती है। अब ये ना इतना महंगा बर्ड है, ना ये इतना कोई
एक्सपेंसिव बर्ड है कि कोई अफोर्ड ना कर पाए। तो अगर आपने रखने हैं परिंदे और अभी आप न्यूली इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आप इस टाइप के बर्ड्स रखें जिनकी मार्केट डिमांड भी है, जिनकी प्राइस है वो हाई भी नहीं है, जिनकी देखभाल भी इजी है। क्योंकि एग्जीबिशन जो बर्ड है वो सेंसिटिव होता है रादर दैन द अदर सिंपल बर्जरी और अंडरसाइज बर्जरी और मिक्स बर्जरी। सो यू शुडंट हैव दिस बर्ड। जो नए आ रहे हैं फील्ड में उनको मैं कभी भी नहीं प्रेफर करूँगा कि वो इस तरह का बर्ड लें, एग्जीबिशन लें या 10,000 और 12,000 और मोर 20,000 बर्ड वो लें और उससे आप ब्रीड लें और वो एक्सपायर हो जाए तो वो शो की ख़त्म हो जाता है। सो आप इस टाइप के बर्ड्स रखें जो इजीली ब्रीड करें, आपके शो को बढ़ाएं, जिनकी मार्केट वैल्यू भी हो, इतने एक्सपेंसिव भी ना हो कि अगर कोई किसी बर्ड की डेथ हो जाती है तो वो उसको दोबारा ले ना पाए, और ऐसा बर्ड भी ना हो कि वो बिल्कुल ही डाउन हो और आप लें उसकी ब्रीड लें और उसकी मार्केट वैल्यू कुछ ना हो। तो ये सब चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए कोई भी जो बर्ड है उसको आप लें। सेटअप अपना केज बाय केज का बनाएं। इस तरह आप इनसे आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। और जो भी न्यू पेट लवर आता है या बर्ड लवर आता है, मैं उसको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट बर्जी से करें, क्योंकि बर्जी सिंपल एक बर्ड है जो सिंपली आपको एक्सपीरियंस देता है, एक एक्सपोजर देता है आपको कि आप कैसे किसी भी बर्ड्स को रख सकते हो। I'm already say my male is very energetic. They are on breeding mode, and you look at size. There is a undersized male, and they are almost not more than 1.5 year. They are a young male, and female also is not more than 1 year, maybe 11 or 12-month age. So they are very nice and beautiful. They are necklace, and the combination of the color, violet color in every bird, even a lovebird, budgie or other bird, they are very fascinating to everyone. Violet color is a beautiful color. So if you don't like my channel, please press the subscribe shape or press the bell icon. सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकॉन शो होता है उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरी जो न्यू वीडियोस हैं वो मिलती रहें। और इफ़ यू वांट सम क्वेश्चन प्लीज़ राइट बिलो इन कमेंट, आई एम डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू।